हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का मिस्टर एंड मिसेस बनिया चैनल पर। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 11। बहुत सारी बातें करनी है, मुझे पता है तुम लोग ये बातें मेरी स्किप कर देते हो। मैं जितनी जैसे ही ये बात बोलता हूँ ना कि बात करनी है, तुम स्किप कर देते हो। सबसे पहले तो मैं माइनक्राफ्ट की कुछ वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। ये नहीं मैं कंफर्म कर सकता कि कब मिलेगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम में भी लिमिटेड ही होता है ना। बता देता हूँ कि पिछले वाला जो 10th एपिसोड था उसमें ईरन जो बड़ा वाला कैप्टन आया था ना, उसका नाम लेक्सिस था या कुछ ऐसा ही नाम था, तो उस कैप्टन ने वो अटैक करने वाले थे ईरन पे, बस उसने रुकवा दिया कैप्टन ने आके। और अब वो चाहते हैं कि ईरन टाइटन में बदले, या फिर शायद ना भी बदले, वैसे बदलना तो उसको पड़ेगा। उसको उससे ये बोला था कि दीवारें जो है वो सील करो, वो सील करो। हाँ, वो सील करोगे ना तो जो टाइटन आ रहे हैं वो और नहीं आ पाएंगे। तो ईरन ने बोला कि ट्राई करूंगा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँ। तो अब इस एपिसोड में यही पता लगेगा कि कौन सी चीज सील होने वाली है और कौन सी चीजें खुलने वाली है। अगर तुम लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। मैं तुम्हें साफ ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि पहले से व्यूज बहुत कम हो गए, पहले के व्यूज और अब के व्यूज में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। तो अगर तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना तो मेरा मोटिवेशन तो हम डाउन हो रहा है यार। कंप्लीट भी नहीं करेंगे। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन डाउन हो रहा है यार, समझो मेरी बात। आप लोग कह रहे हो कि अटैक ऑन टाइटन बनाओ, हमने वो सीरीज स्टार्ट कर ली, अब हमें व्यूज नहीं मिलेंगे तो हम इसको कंटिन्यू भी नहीं करेंगे। अब आप लोग देख लो, आगे देखना चाहते हो तो व्यूज लेकर के आओ, अदरवाइज तो बस यही कहना चाहूंगा। अगर अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लो, और बाकी के सारे एपिसोड तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगे। एक बार चैनल स्क्रॉल करो, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो तुम लोग जाके देख सकते हो, तुम्हारे टेस्ट की होंगी। करते हैं चालू। तो चालू करते हैं बैटल फॉर ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट पार्ट 7। I'll do it! I don't know if I can, but I will! यही बता रहा था मैं तुम्हें। Excellently said. You have the heart of a lion. वाह। Staff officers, up! We have a plan to flesh out! Wait, we can't actually be moving forward with this as our linchpin strategy. It's just something I tossed out there. I was thinking the same thing. Except, he seems like a guy who knows what he's doing. Has it all under control, like we can't see the forest for the trees, but he's got a bird's eye view. You think so? I do. Either way, though, we've got a whole other problem to address before we can get your plan off the ground. And my gut tells me that the commander's keenly aware of it. Which would be... पता है उनको ना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। Aren't our only foe. Look sharp, soldiers. The fate of mankind rests on your shoulders. मिकासा कुछ नहीं बोली, उसे लगता है ये कर लेगा। Retake trust? Are they kidding? Someone up top's lost their marbles. How'd they expect us to show ये up? देखिए, और ये बाकी के बंदे मोरल डाउन कर रहे हैं। It's a damn suicide mission. Lost cause, no doubt. Defending Wall Rose is the only real option here. Jackasses. Some bureaucrats pushing this through for the glory. I can't go back. ये देखियो, We're all gonna die! ये देखिए, इसकी फट गई और इसके चक्कर में और भी लोगों की फट जाएगी। Stop shrieking like a sniveling coward. पागल है, ऐसे डिमोटिवेट कर रहे You're a हैं। liability. Sir, please! Look at us! We're being marched to an open grave like lambs to the slaughter! You too good to sacrifice yourself for the good of humanity, soldier? Or do you prefer I cut you down right now as an example to your comrades? वाह। I'll take it over being fed to a titan like human candy any day! Get a hold of yourself! Let go of me! Let go! I'm not going back to the nightmare! अब उसके चक्कर में ना सब लोग पता क्या होगा, हाँ, उसके चक्कर में ना और लोग भी और चीजें सोचने लगेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि वो डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे भाई। और वैसे भी मान तो सकता हूँ मैं कि सुसाइड मिशन है, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा है नहीं, है ना? तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? मरना तो वैसे भी है, तो मरना तो वैसे भी है, तो ट्राई करके मरो ना यार, ऐसे मरने का कोई फायदा नहीं है। चलो देखते हैं भाई। He's got a point. So, who do you think's gonna have a nervous breakdown next? I don't know, but trust isn't the way I want to go. Come again? I was
Speak up! At the top of your lungs, make as much noise as you can, cadet! You think everyone else doesn't feel the same way about this stupid idea as you do? Now stir up a damn distraction so I can get out of here! And where exactly do you think out of here is? Look, man, I just want to see my daughter. We're all dead anyway, right? यार It's thought by many that before the Titans held sway, mankind consisted of scores of different races, different creeds, all scratching and biting at each other for blood. It's not difficult to believe that second part. Some wise man or other is reputed to have said, though understand I'm paraphrasing here, that humanity required an enemy greater than itself just to survive. What do you suppose he could have meant? यही कहना चाहते हैं, अगर हम लोग यूनिटी में काम करेंगे ना तो काम बढ़िया होगा। अगर सिंगल सिंगल करके कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई डीमोटिवेट कर रहा है, तो वो जो काम होने वाला होगा ना वो वैसे भी गड़बड़ हो जाएगा। दुश्मन उस चीज का फायदा उठा लेंगे। गड़बड़ तो वैसे भी इतनी सारी हो ही रखी है भाई, थोड़ी बहुत और सही, लेकिन वही है ना कि ये लोग समझ नहीं रहे हैं। अब वो देखो एक और बंदा आया था, वो और भड़का रहा था। कुछ लोग डरे हुए हैं और कुछ जानबूझ के डरा रहे हैं। पता है क्या, अगर ऐसे ही डरते रहेंगे ना फिर आगे कुछ होएगा नहीं। समझो मेरी बात को भाई, इन लोगों को फेस तो करना ही पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जिससे फिर आगे कुछ कर पाए भाई। बाकी देखते हैं लोगों का क्या कदम होता है। This is the first time I've ever heard it, sir. I guess he thought we'd all join forces. Some wise man. I like the way your mind works. You're almost as twisted and cynical as me. Well, it's obvious to me the guy didn't have a clue what he was talking about. Come on, here we are with an enemy greater than ourselves bearing down, and look at us. Exactly. If our species doesn't pull it together soon, Titans will be merely the instruments of our demise, not the cause. ओ इसकी फट गई होगी, इसके साथ क्या कर रहा है? Well, I'll be damned. ओ भाई Wait, what? Is he? That little punk is telling me to get back to work. At least I can assume Mikasa and Armin are all right, judging by his attitude. Still, though, why in God's name is he with the commander? मैंने बोला ना उसकी फट जाएगी इस चीज को देख के कमांडर के साथ क्या कर रहा है? ये दारू वाला पीता है इसमें? Care for a swig? Yes, sir. पानी होगा शायद। हाय हाय, ये क्या था? If you're gonna kill me, just do it and get it over with! Shut up! Don't think I won't! क्या टेंशन थी? Take note! The blueprint of the trust recovery operation is this. Our primary objective is to reseal the hole. Yes, you heard right. What's more, it will be done manually. What? That's impossible. We just don't have the tech. As for how the task will be done, that's where this fellow comes in. Allow me to introduce Cadet Aaron Yeager. सब लोग हिल गए। कैसे आ गया? सब लोग हिल गए। कुछ लोगों ने देख लिया तो कुछ ने देखा ही नहीं कि ये वापस भी आ गया। सब लोग हिल गए भाई साहब। Appearances deceive you. This young man is in fact the successful product of cutting-edge science. Titan Fantastic as this may technique. sound, Cadet Yeager possesses the ability to fabricate and control a Titan body at will. Somebody tell me the commander's off his rocker, because otherwise I'm just too thick to get what he means. Shut up and pay attention, idiot. Recall the massive boulder roughly a league from the gate. Having assumed Titan form, Cadet Yeager will hoist said boulder on his back, schlep it to the hole, and voila! And this is where you all come in. Your job will be to defend him. Yes, defend a Titan against his own kind. What do you mean we don't actually need to fight them? There's an easier way. Sorry, I know it's not my place to interrupt. I mean no disrespect. It's all right. Just go on with what you were saying. Right. Thank you, sir. See, whatever else is going on around them, Titans are generally drawn to large groups of people. If enough of us collected in the corner away from the breach, we could lure the Titans out of Aaron's path. He could be discreet about moving the boulder. He also won't have to slow his pace while we fight the others off of him.
And since the Titans will all be in one area, we can pick them off via cannon fire without incurring casualties of our own. अब बाई चांस Now, उससे I'm नहीं not मरे तो suggesting we leave Aaron defenseless. That'd be too risky. We'll need a modest band of elites to act as his bodyguards. There's no way of knowing how many Titans might come through the hole while he's trying to patch it up. His security detail will need to be able to handle them. Easy enough, I think. We can retool the plan around that. सही है भाई, Yes, प्लान we're तो वही है making भाई, मस्त प्लान है, अच्छा प्लान है हाँ। लेकिन मुश्किल भी है थोड़ा। मुश्किल है क्योंकि देखो कुछ कुछ इसमें मिसहैपनिंग हो सकती है, जो जिन्होंने बोला जरूरी थोड़ी ना हर चीज हर बार वही हो सब कुछ, ठीक है ना, कुछ अलग भी तो हो सकता है ना। हम सोचे वही चीज हो, मुझे लगता है कि कुछ अलग होने वाला है, मुझे लगता है कि कुछ प्लेयर्स को हम और खोने वाले हैं, पता नहीं मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ या मेरे क्या है देखना, लेकिन ऐसा मुझे मेरे गट फीलिंग आ रही है भाई कि कुछ खतरनाक होने वाला है, तो देखते हैं भाई। Namely that Aaron, even in full-on Titan mode, is strong enough to move the rock. I mean, to be perfectly honest, there's very little... सबसे बड़ी बात भाई, अगर बाई चांस ईरन टाइटन में बदल ही नहीं पाया पूरा तरीके से, तो वहीं फसल मच जाएगी भाई। बेइज्जती हो रही भाई, बहुत गंदी, बहुत तगड़ी बेइज्जती होगी भाई, सही में मेरे को ये डर भी है। Reason for us to suppose he can. I have my doubts, serious ones. As do I. Sending people to their doom on a whim isn't a tactic I'm fond of. Uncertainty's killed too many already. But the commander's right. We must do this. Agreed. We're working against the clock worry here. about time. Titans are still lumbering into Trost as we speak. There already may be more than we can handle, frankly. The longer we wait, the worse our chances of success become. And it goes without saying, the better our chances they'll bust through wall roads. मिकासा और कैप्टन ले भी मारेंगे दबा के भाई। There's something else too. Even the bravest of us can indefinitely bottle our fear. Not before something gives. और सबसे बड़ी बात, अगर आर्मर टाइटन आ जाए तो Is this real? Is he saying we finally have an advantage? They're lying! I'm not gonna be drawn into sacrificing myself for this crap! We're just disposable tools for you people! You expect us to live and die by whatever the hell comes out of your mouth! बस You mean he's a human weapon? Come on, they're obviously full of it. We're being played! This is not how I'm going out. Good luck to the rest of you. I'm out of here. Me too. Yeah, screw a bunch of this. So help me God, I'll execute you on the spot! To hell with you! My family gets the time I have left! This is getting out of hand. I know. If we don't act now, the whole thing will break down. Traitors! I'll kill you where you stand! Desertion is answered by death! सही है। Anyone wishing to leave will by my personal order not be charged with treason! Those who have seen a Titan firsthand will not be expected to revisit such horror again! वाह हाँ, सही कह रहा है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन भाई समझना तो सबको पड़ेगा ना, एक के समझने से कैसे बात बनेगी यार। Whomever this applies to, you may leave with my blessing. हाँ वाह, जिनको जाना चले with जाओ। family or loved ones they would spare from the same trauma may also leave. The crown will continue to recognize your service. Thank you and good luck. सही बोल दिया भाई, इसने भी सही बोल दिया, जबरदस्ती नहीं है वैसे। लड़की को खा लिया। अबे खुद ही आ जाएंगे वापसी मुझे लगा। Daddy's coming, sweetheart. Don't you worry. Now, think back 4 years ago. Namely, the operation to retake Wall Maria. I bring it up because you all deserve to have your suspicions confirmed. Officially, we labeled it reconnaissance. But in fact, as most of you probably know, it was little more than a purge. A thinly disguised exercise in population control. We knew this in our hearts, of course we did. Yet we turned a blind eye. We supported the state-sponsored myth because the deaths of our fellow human beings allowed us to survive. Pure and simple. अब सबको टोस्ट चढ़ जाएगा भाई, देखिए उसकी बात सुन के। We share the blame, all of us. The citizens of Wall Maria sustained themselves on the wholesale slaughter of the refugees who'd flown to us for help. But turnabout is fair play, is it not? If Wall Maria succumbs, the population will fall by a whole other order of magnitude. The lands comprising Wallsina wouldn't support half the people now living. If we're wiped off the face of the earth, the culprits will not have been the Titans, let me assure you.
No, no! We'll have done it to ourselves! आज नहीं तो कल मारे ही The जाओगे line isn't drawn now, it won't be drawn at all. If we must die, let us die here! हाँ वही तो, यही तो मैं कहना चाह रहा था देर से। अब कुछ तो आएंगे जिनको जाना तो चलेगा भाई, और क्या है। I don't know if I'll actually be strong enough in Titan form to lift that rock in the first place, but I'm sure as hell going to try. Maybe this is naive. Maybe we're running on false hope. अरे मिकासा कैप्टन लीवी वगैरह मारेंगे पेल के भाई, कोई दिक्कत For नहीं। them, और भी for all बंदे of हैं। us. My role, no, my duty is to make false hope real. ये कह रहा है, उससे ही उम्मीद है फ्रंट बैक टाइटन जंप दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कोर सिग्नल सिलेंडर्स, अच्छा बता रहे हैं डिवाइस। Good, you're all here. You have one mission and one mission only. Protect Eren Yeager. Any risks associated with this operation are yours to eliminate, which I'm sure you'll surmise means out of everyone, your jobs are the worst. Our success or failure will depend on you. In fact, it's safe to say the fate of mankind will reflect your own. हाँ सही बात है। May I ask something? Of course. Are you certain about this? Pinning our hopes on Jaeger, I mean. Rico, don't. I'm sorry. I assume we all have our doubts. Sir, please. With all due respect, the kid's abilities are an unknown quantity. We don't have the first idea of what he will or won't do. यही If तो he मैं बोल can't रहा lift था the अभी। rock, or worse, he goes rogue, हाँ, a lot of फिर lives क्या will होगा? have been lost for nothing. You make a good point. Perhaps we ought to just give ourselves up to the Titans willingly. Personally, the idea makes me sick. I'm a sore loser. You'd think I'd be used to it. I've been stuck on the losing side since day one. I'm a stubborn old fool, though. Just once I'd like to know what victory feels like. ओए! इसके ईरन के जो पापा थे वो शायद इस वाले कैप्टन को भी तो जानते थे। मैंने शायद उसके पापा को इसके साथ देखा, कमांडर के साथ। तो क्या पता ये कमांडर भी ऐसा ही कुछ बन सकता हो। कमांडर बन सकता हो, या कमांडर को पता है ईरन की कैपेबिलिटी क्या है। हाँ ये भी हो सकता है कि पता हो कि हाँ अगर वो ऐसे करके बन जाएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये जैसे बोल रहे हैं कि इसके जो ईरन के फादर है वो इस कैप्टन को जानते थे, तो आप लोग बताना कि ये चीज सही है या गलत है। हाँ ये मुझे क्लियर करना है एक बार, क्योंकि आगे के लिए क्लियर रहेगी। मैं तुम्हारी थिंग इज दैट अगर वो जानते थे तो डेफिनेटली इस कैप्टन को पता हो कि ईरन में कैपेबिलिटी है टाइटंस के साथ लड़ने की, तभी वो इतना बड़ा कैप्टन होने के बाद श्योर हो रहा है, बिल्कुल इतना श्योरिटी दे रहा है और साथ में ईरन का पूरा सपोर्ट कर रहा है। हाँ तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंट है उसमें, तो कुछ वही ना तो कुछ पता हो। कमेंट करके बताना भाई इस चीज के बारे में। और मैं तुम लोगों की सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, सब कुछ पढ़ता हूँ। तुम आज देखो, कल देखो, परसों देखो, रिप्लाई देते हैं, या 5 साल बाद भी कमेंट करोगे तो भी तुम्हें रिप्लाई आएगा, ठीक है, जब तक चैनल रहा, अगर मेरा अच्छा चल गया तो। और अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब आ रहा होगा, कर लो, ठीक है। ऊपर तुम लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पर भी जाके फॉलो कर सकते हो। थोड़े दिनों में डिस्कॉर्ड का भी लिंक तो मैं दे दूंगा, तो डिस्कॉर्ड में तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं अभी हम, तो थोड़ा टाइम देंगे उसमें भी, तब जब तक वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं चालू। Than if I have to resort to extreme measures. Naturally, sir. I'm sure we all feel the same way. Then I suppose we'll just have to wait and see. The boy's ये abilities may कुछ be an जानता है unknown भाई, quantity, I'll give you इसकी that. शक्ल से पता लग रहा है। But I'll take it over the known quantity of our options. Sir, it's time to get the decoy operation on its feet. ये खत्म कर देंगे Ian एपिसोड, मुझे लग रहा है यहाँ Dietrich, पे। Rico Brzezinska, Mita Yarna. ये 3 मुझे लग रहा है इनके बेस्ट हैं, मतलब मारने में। लेकिन कैप्टन ली भी तो दिख ही नहीं रहा कहाँ है, और मिकासा भी नहीं। मिकासा को भी ले लेते तो वो भी प्रोटेक्शन तो कर ही देती ना। होगी मिकासा और आर्मिन खड़े तो हैं वहाँ पे। You यहाँ are पे the नहीं है ना। garrison regiment's best and brightest. बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, देखा। Win this one for humanity. Sir! Excellent. Ian, I'm assigning you squad leader. On-site Oh. contingencies will be yours to deal with. वाओ। But sir, that is... I have no objections. Neither do I. Please, sir, I'm not competent enough. Now. You appreciate alcohol, do you not? Sir? You know a good vintage. You know a shoddy one as well. So, there it is. Sir!
I'm so sorry, Aaron. I was just talking out of my head. It wasn't my intention for you to be pulled into all this. Stop apologizing. The fact is you have a gift for strategy and you know it. हाँ, सही strategy बनाता भाई। Aaron, I really think I should... You're not coming with me. You're on the decoy squad. Period. No way. I'm not leaving you alone. I won't take another chance. Knock it the hell off! Get it through your head that I'm not your responsibility. You're not my mother. ओए, ये ज़्यादा बोल दिया इसने। Ackerman, I want you on the squad that'll be providing Jaeger with backup. We'll need your skill. Hop 2. Let's get this started. ओ भाई सही था भाई। See, अबे खत्म कर देंगे यहाँ पे don't me, okay? Yeah, you either. Hey, Let's get this straight right now. Whatever you are, all I care about is you getting that rock in place. Can we count on you? Yes, sir. I won't let you down. You're absolutely sure you're gonna be all right to do this? I got it. Seriously? How many times do you want me to say it? You just go do your job and I'll do mine. Look, now's not the time to be playing house. Come on, it isn't like that. I'm gonna say what we're all thinking here. The fact that the fate of mankind depends on a little brat like you doesn't make me hopeful. All of you, यही stop तो भाई। now. We're about to देखो range बताइए of the giant कैसे boulder. आगे का कमांड होती है मेरे को समझ I'm में not नहीं आ seeing रहा। any Titans nearby. The decoy strategy must be doing the trick. Don't be a hero! Just focus on luring the Titans to our corner of town! If you don't need to, don't engage! Something I want you to be aware of, Jaeger. Make no mistake. More than a few of our comrades are going to die today trying to pull this off. Their blood's on your hands. I'm talking friends, captains, lieutenants, peons. Yes, they are soldiers. They are prepared to die. But not this But time. remember, every one of them is a flesh and blood person. ये बड़ा आ रहा है भाई। अब इनसे तो लड़ना ही पड़ेगा। अब इससे तो लड़ना ही पड़ेगा भाई। Hold position! Get ready! चलो। Every मारो one of उसको, them मारो। has dreams, hopes, fears. Every one of them has a मोटिवेट name. कर रही है उसे इनडायरेक्टली। Alyosha, Dominic, Fine, Isabel, Ludwig, Martina, Guido, Hans. They're not pawns. They're people. Some have been living together like family since their cadet years. This may well be the end of them. Whole families snuffed out in a moment. Whatever you think your mission is, Jaeger, your first and foremost concern today is making sure their अगर यहाँ पे टाइटन वाला वो आ जाए क्या बोलते हैं उसको आर्मर टाइटन आ गया Whatever तो happens, you keep that lodged in your mind. Take everything that comes with deadly seriousness. Right! This is happening. I'm going to do this! Not once in this century of terror has mankind risen above the Titans. Their every craven, bloodthirsty advance has left a wake of inestimable loss for us. Lives taken, territory abandoned. However, should we succeed, we'll make history. Today is the day. Lands taken by our greatest enemy will be reclaimed. This is the place. Let's do it! For the first time, we will know what it means not to run, but to meet the Titans head on and win. ये क्या चलाया? वो पहुंच We've गए हैं got भाई वो green पहुंच गए smoke, sir. The elite squad has commenced the operation in earnest. Now it may seem an insignificant plot of land compared to the vast tracts of former glory long abandoned. But as a symbol, as an idea, trust regained shall stand as a reclamation of pride and hope beyond ये भी measure. pro हो गया भाई। Something greater than we have ever taken. ओए भाई ईरन बन गया। क्या? बॉलिंग पता नहीं पूरा बनाया कि नहीं बनाया अभी।
ओ जल्दी दिखाओ ना यार। ओए मजा आ गया। अब आएगा, मुझे पता लगा यहीं पर 2 भी कंटिन्यू कर देंगे भाई। Proportion. It's not easy to see how he'll manage to lift it. ओह But in भाई terms of sheer will, he's got this. I know he does. आगे समझ में अब बॉडी कितनी तगड़ी है। मिकासा को मार दिया। भाई देखो सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन देखो ईरन वो भी बन गया था, बढ़िया सा टाइटन बन गया था, लेकिन जो सामने पत्थर लगा था पहले तो मुझे श्योरिटी नहीं है कि वो उठा भी पाएगा कि नहीं। दूसरी चीज वो ईरन बनते ही और उसने मिकासा पे एकदम हमला कर दिया, और वो सीन देख के मेरे को अंदर से ऐसा लगा कि शायद मिकासा के आसपास कोई टाइटन होगा, उसने मारा उस टाइटन को होगा, बट सीन एंड में ये दिखाया कि वो मिकासा को मारा है। ताकि हम अगला एपिसोड देखें ताकि क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए। भाई क्योंकि होता ऑलमोस्ट यही है, पता नहीं क्या होगा। देखो भाई मिशन के हिसाब से अभी तक सब कुछ ठीक हो रहा था, तो ये लास्ट में बकचोदी दिखाई ना, मुझे लगता नहीं है ये मिशन के हिसाब से हुई। सस्पेंस बनाएंगे तभी तो। सस्पेंस भी मैंने बोला ना, प्लान हमेशा एकदम सही नहीं जाता भाई, क्या पता सीरियसली कुछ हो गया हो, क्या पता ईरन बदला हो, लेकिन इस बार ईरन की बॉडी पे कंट्रोल ना रहा हो। एनीथिंग कुड बी हैपेंड यार, कुछ भाई तो कुछ भी हो सकता है भाई। आगे का जानने के लिए तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरह करना है बस तुम्हें सब्सक्राइब यहाँ पे आ रहा होगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना और इस वीडियो को लाइक करना, ताकि हमारा मोटिवेशन दोबारा से एकदम बढ़ जाए, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा मजा आएगा भाई, तुम लोगों को पक्का श्योर है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी तरीके की वीडियो तुम्हें दे पाऊँ। अब जल्दी ही तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा, आगे एक सॉन्ग आने वाला है, एक नॉट योर टाइप की वीडियो आने वाली है, और क्लाउन का एपिसोड आ सकता है। क्लाउन का एपिसोड भी आ सकता है जल्दी। तो ये 3-4 चीजें आ रही हैं, शॉर्ट तो तुम्हें डेली मिलते ही हैं। और साथ के साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो भाई, 500 फॉलोअर्स हमारे होने वाले हैं, तो तुम लोगों ने जिन लोगों ने भी फॉलो नहीं करा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे यूजर नेम भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे जाके आप मुझे सर्च भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।